हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ स्टील राइजिंग। सो पिछले एपिसोड में अपन ने लुक्सेमबर्ग जो एरिया है ये कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे अपन एक कॉन्वेंट पे जाके जो भी ये पैट्रियट्स है, यानी कि जो तीन चार कैरेक्टर्स है मेन मेन, उनसे मिलते हैं। एक्चुअली तो सारे कैरेक्टर्स नहीं आते, बेली एंड बिशप अभी तक उधर पहुंचे नहीं है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखो क्लिक करके तो यू कैन सी दैट देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स। बेली का नाम है, बिशप एपिग्रिगोर का नाम है, बिशप भी होगा वहीं पे। वो सब अभी तक उधर आए नहीं। अपन को उधर मिला था मेरिबियो मिला था। उसके बाद अपन को मिला था अपना लेवोइसियर मिला था, और एक और दो कैरेक्टर और मिले थे। तो जो बचे हुए दो कैरेक्टर्स थे वो दोनों ही नए कैरेक्टर्स थे। उसमें से एक ने अपन को दो साइड मिशन दिया, ये जो फाइंड द राइडर्स एंड गो टू द साइट ऑफ द एक्सचेंज ये वाला। एंड दूसरे बंदे ने अपन को एक मेन मिशन दिया। अब उसका नाम क्या है, एक सेकंड, जर्नल में शायद दिख जाएगा। यहाँ रोजबेरिस फायर, रॉबेस्पायर या रॉबेस्पायर। सो बेसिकली जब एजिस उसे बताती है कि उसे यूजिन वॉकिंसन को प्रिजन में बंद करके रखा है ना किंग ने, तो उसे बचाना है, ये उसका मेन एम है। तो वो बोलता है कि जहाँ पे कैद करके रखा है फिलहाल उधर जाने का कोई रास्ता नहीं है, प्रिजन की तरफ जाने का। तो जब तक उधर जाने का टाइम आता नहीं है तब तक तुम जो ये रिबेल्स है, जो ये रोबोट से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मदद करो। तो उसलिए उसने अब अपन को यहाँ पे भेजा है लेस इनवैलिड्स। अगर तुम्हें याद होगा तो जब अपन पेरिस में आए थे तो सबसे पहला लोकेशन जो अपन ने विजिट किया था वो यही था। तो अपन वापस यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एरियाज थे जो तब अपन एक्सेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब अपने पास ग्रैपल नहीं था, वॉल तोड़ने की एबिलिटी नहीं थी, डैश की एबिलिटी नहीं थी। लेकिन अभी अपने पास वो तीनों आ गए, तो वो न्यू लोकेशन जो भी है वो अपन एक्सप्लोर करते हुए चल रहे हैं। एनीवेज लास्ट एपिसोड अपन यहीं पे रैप अप किया था। यहाँ पे क्लोज अपन आ चुके थे एक बॉस फाइट के। एंड मेरे पास बहुत सारा एनिमा पड़ा है तो थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, देखते हैं। ओह, अरे, डिफीट द अनस्टेबल ऑटोमैट, उसके बाद वो चेक पॉइंट खुलेगा। ये रास्ता किधर जा रहा है? A letter from the parish priest. Okay. I am obliged to the Orleans, where my sister, who has fallen ill, beckons me to be her side. I therefore entrust you this key to the ossuary and ask you to preside over the funerals in my absence. The Lord be with you. Okay, Father Michelet. ये बंदा एक्चुअली काफी लकी है, रोबोट्स के अटैक करने से पहले ही बच गया। Oh, that is the boss. अरे ये उस टाइप का बॉस है जो मेरे को पसंद नहीं है। ओ, ये आइस वाला है। तभी मैं सोच रहा हूँ ये आइस इस पर वर्क क्यों नहीं कर रहा है। क्या फायर इज गोना मेस अप दिस गाय, 100% श्योर है। बस अब हमको जिंदा बचना है। ओ भाई, थोड़ा टाइम प्लीज। डा, 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 तो उधर सकते हैं क्या स्टेयर्स?
और किधर गया ये? हैं? अरे बहुत जिंदा है अभी, पहली फ्लैशबैक दिखा रहे हैं ये लोग। ये नेकर दो नए कैरेक्टर्स हैं, इनसे अपन इनका फ्लैशबैक पिछले एपिसोड में ही देखा। ये कुछ रोबोट से भाग रहे थे एंड फंस गए। चटनी बना दी होगी। There we go. Over there. Grade 2 stun module. Module key bismuth block. Okay. Okay. सबसे पहले चेक पॉइंट एक्टिवेट करना है। एल्केमी सोच रहा हूँ 20 तक कर ही लूँ। वो बिस्मिथ ब्लॉक चाहिए, ये लेवल 5 पे चलेंगे, स्केलिंग हो जाएगा इसका। एक सेकेंड, कैन बाय बिस्मिथ ब्लॉक फ्रॉम हियर, लेकिन देन अगेन शायद बिस्मिथ ब्लॉक अपन को आगे कोई एनिमी भी गिरा सकता है। पुराने सारे। Ooh, this is new. Saint Elmo batons. Ranged attack. These batons are infused with alchemical properties and delivers a far-reaching fulmination attack. Not sure कि एक सेकेंड बाय करके देखते हो इसको, वो अपग्रेड्स में दिख जाएगा। जैसे कि मेरे पास फ्रैंकलिन क्लॉस वो मुझे पसंद है, बट वो एजिलिटी स्केलिंग बढ़ रहा है उसका। अब ये वाला जो पैटर्न खरीदा मैंने, ओके एक्चुअली इसका एल्केमी स्केलिंग बढ़ रहा है। आई गेस वी कैन यूज इट टेक्निकली। लग रहा है इसको अपग्रेड करने के लिए। मैं इसको अपग्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई लग रहा है इलेक्ट्रिक वाला, जैसे मुझे फ्रैंकलिन क्लॉज भी पसंद है, बट इसकी स्केलिंग उतनी बढ़िया नहीं है। रह तो नहीं गया, देखते इसके अंदर जा सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। ऊपर कहीं पे ग्रैपलिंग हुक नहीं दिख रहा है। ये भी बाद में अनलॉक होगा, ठीक है। इस वाले पैटर्न्स भी मैंने कभी अपग्रेड किए ही नहीं है।
एसेंस ऑफ वॉरियर स्पिरिट, नाइस। वॉकन को 1000 एनिमा के आसपास गिरा था। Guillaume, they're back. It's going to be all right. This machine is alone and the door is barricaded. It won't hold. Did you see how easily those demons entered the church? Don't be afraid. I mean you no harm. Oh, Seigneur, he can speak. What do you want with us, Automat? What happened in this church? You should know. It was your kind that slaughtered these lambs. I don't think those who were able to escape stand much of a chance either. Where are the survivors? They're hiding in the catacombs behind the church. There's also the gentleman that the automats took alive. Where did they take the gentleman? We haven't the slightest idea. That's enough questions now. Leave us be, but do. एक बंदे को पकड़ के लेके गए थे ना चर्च में से, आई थिंक उसी की बात कर रहे हैं। सर पिछले एपिसोड में अपन एक साइड मिशन भी किया था जिसमें अपन ने ये देखा थी कि यूजीन वॉकन्सन और उसकी जो बेटी थी उन पे भी रोबोट्स ने अटैक कर दिया था, और फिर जो यूजीन था वो अपने बेटी को बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, कहीं और चले जाओ। तो एजिस वहाँ के क्लूज को इंस्पेक्ट करने के बाद वो किसी लोकेशन के बारे में बोलती है कि यहाँ पे इसकी बेटी छुपी हुई हो सकती है, बट वो लोकेशन अपन जब पहुँचेंगे तब देखेंगे एक्चुअली वो कौन सा एरिया के बारे में बात कर रही थी। And get बढ़िया। एक अगर ऐसे बड़े बड़े एनिमीज पे एक स्नीक अटैक मिल जाए ना फिर उनको हराना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनकी आधी एचपी वहीं पे गायब हो जाती है। जाना तो उस तरफ है। टॉप वाले एनिमीज जो है ना ऐसे दीवार पे चिपक के बैठे होते हैं। और लगा उसे सब्लिमेटर क्रिस्टल क्यों नहीं मिल रहा है? सब्लिमेटर मिले जा रहे हैं बस। क्रिस्टल से तुम्हारे हीलिंग नंबर बढ़ते हैं लास्ट से। शॉर्टकट खुल गया, बढ़िया। ओ भाई उठने तो दे। मर जाएगा अपने आप ही। मुझे तो ऐसा लगा था अपन को इधर ही जाना है। तो होटल्स मेन मिशन तो कोई और दिखा रहा है। ये फिर ये लोकेशन क्या है? यहाँ पे नई साइड मिशन है। तो जाने को बोल रहे हैं अपन को। ओह ओके, आई थिंक अपन को वो उसका की कुछ मिलेगा बाद में, वो डोर का। एक दो तीन एनिमीज है आपने। ध्यान नहीं खींचना।
एक सेकंड, अपने पास वो स्टोन है ना, वो फेंक के मारते। इन्वेंट्री में कोई ग्रेनेड्स है जो बहुत पड़े, फ्लेम ग्रेनेड सारे थोड़े थोड़े से ही है। किधर गया वो? ये रहा। आजा। क्या मारते हैं? शॉर्टकट तो नहीं लग रहा, वो शायद आगे प्रोग्रेशन वाले एरिया लग रहा है। एक्चुअली अपन को उस तरफ जाना है। ये वाला एरिया कौन सा है? एक सेकेंड, वो देख के आऊँ, शायद में भी वो शॉर्टकट हो सकता है, नॉट श्योर। शायद शॉर्टकट ही है। हाँ, ये शॉर्टकट है। तरफ जाओगे तो अपना चेक पॉइंट। ठीक है, तो अभी अपन को इतना घूम के आने की जरूरत नहीं है। I'm getting closer to Les Invalides. Here, I should be able to cross the moat easily. मुझे लगा यहाँ पे कुछ लूट वूट होंगी। फास्ट है।
क्या पानी में कूदूंगा तो मर जाऊंगा? जाना किधर है यहाँ से? ओह आई हैव टू डैश, ओके। ओह होटल डेस इनवैलिड, यहीं पे आने के लिए बोला था उसने। Okay, cool. एकदम कोने कपचे में छुपा के रखे होते हैं इन्होंने चीजें। मेमोरी किसी की। The debt was no longer sustainable, Your Majesty. Hacker. Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom, but the coffers are woefully empty. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit, and which is now forcing us to levy new taxes. Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty, as long as it is distributed fairly. The representatives of the nobility, the clergy, and the Third Estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Your Estates General. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned cahiers de doléances. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. ये जो किंग है ये थोड़ा अजीब लग रहा है। इससे पहले अपन ने एक दो बार किंग को देखा था, बट ये वाला किंग काइंड ऑफ थोड़ा सा कॉकी एंड क्या पता, थोड़ा सा उसकी कैरेक्टर्स अलग लग रहा था। बाकी नेकर शायद मे बी जो यहाँ का बैंक वगैरह देखता है किंगडम का फाइनेंशियल सब कुछ, शायद उसका हेड है। एंड नेकर जैसे कि मैंने बताया एक नया कैरेक्टर लास्ट एपिसोड में उसको इंट्रोड्यूस किया है। मुझे लग रहा है शायद उसको कोई मेन बॉस ने पकड़ के रखा होगा, अपन को उसे बचाना होगा। उसके 2-3 मेमोरीज अपन ने देखे हमें अभी तक। This seems like a main boss fight 100%। नहीं क्या 2 हील है मेरे पास। या लेट्स गो ट्राई करते हैं। हाँ इसको हटा दो। सेंटिनल बॉस लग रहा है, मेन बॉस जो होते हैं ना वो उस टाइप के। इलेक्ट्रिक वाला है, ठीक है। सो फायर एलिमेंट आई गेस वर्क करना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा तगड़ा है। ये क्या हल्क बस्टर आर्मर है क्या? ओ भाई
बड़ा करने वाला वो भी समझ में आ गया था। मोबाइल हो गया, बहुत बढ़िया। एंड में इमोबिलिटी बिल्डअप हो गई थी। टफ नहीं था उतना, स्लो था बहुत। पहले तीनों बॉसेस जिससे अपन लड़े थे वो इससे ज्यादा टफ। Suzanne, my dear Suzanne, ये रहा take my नेकर। hand, please. Don't let them take me away. No. Oh no, this has to stop. I don't want to be tormented anymore. That is not my intention. I have come to rescue you. Rescue me? But what on earth are you? It is of no importance. बाल बहुत अजीब है जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना इसमें। बिफोर ही woke up, his identity, the condition of his arrest. What did you see and hear before you regained consciousness? I had frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. Oh, it's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? तो बेसिकली हो ये रहा है, इनकी सोल को ये बड़े से जो बॉसेस है उनके अंदर कैप्चर किया जाता है जब इनको बॉक्स के अंदर डाला जाता है, एंड इनको ब्रेन वॉश करके कंट्रोल करता है वो जो किंग का राइट हैंड है, उसका नाम कहता है कैलिस्ट्रो या कैलिस्ट्रो जो भी है। तो अभी तक जितने भी मेन बॉसेस थे वो लोग ऐसे ही वर्क करते हैं कि किसी कैरेक्टर को पकड़ के बॉक्स में बंद कर दिया एंड उनके सोल से मैनिपुलेट किया जा रहा है ऐसा कुछ। Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker, Ministre des Finances. फाइनेंस मिनिस्टर I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. How and when were you captured? When the machines attacked, my wife and I fled our home to hide not far from there, in the Église Sainte-Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing down the faithful. My wife, my poor wife, she wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? What will you do now? There is no future for me in this kingdom. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. I will take you to the Cordelier convent. You will be safe there. ओह, सीधा टेलीपोर्ट कर दिया। अरे यार,
वो एरिया में कुछ और था कि नहीं वो भी नहीं पता। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि सीधा अपन को टेलीपोर्ट कर देगा, क्योंकि वहाँ पे और 2 साइड मिशन बचे। बट ऑफ कोर्स कुछ अभी नया मेन मिशन आएगा, क्योंकि मेन मिशन अपन ने कंप्लीट किया है। फिर एक बिशप नहीं, ये एबर्ट आ À गया। la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur, Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. क्योंकि कोई भी बड़े ऑटोमेट ने अटैक किया नहीं है। Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre, a labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Monsieur Necker. I owe you my life, madame. So I am embarrassed to ask you for anything more. Do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear, after everything I've done for him, my abnegation. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life and my fortune as well. I refuse to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally fill the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts. Bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire de fer in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there.
I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides. We were separated in the Église Sainte-Marie, on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. तो भाई कुछ मेन मिशंस, कुछ साइड मिशंस, काफ़ी सारी चीज़ें मिली है। इसका नाम क्या है? अच्छा, ये लाफायते जो है, ये मुझे लगा यहाँ का पुलिस ऑफिसर या ऐसा कुछ है, इसलिए रोस्प्री ने अपन को बोला कि लाफायते ये चीज़ सुनना नहीं चाहिए, एंड उसने अपन के नए कैरेक्टर के बारे में बताया जो आई थिंक मे बी चोर या कुछ होगा, क्योंकि लाफायते उसे ढूंढ रहा है उसने बोला था। लेकिन वो बंदा जो है उसे यहाँ की जो लैब्रियंथ है एंड छोटे मोटे जो हिडन लोकेशंस एंड पाथ्स है वो सारे उसे पता है, वो बोल रहा है। तो अगर उसे अपन ढूंढ ले वो बंदे को, तो वो अपन को मे बी प्रिजन तक जाने का लोकेशन दे सकता है, पाथ बता सकता है। लेटर टू मोसाई डी लाफायते, माय डियर हस्बैंड, एज एग्रीड आई रिसीव्ड मोसायर मर्सियस, डायरेक्टर ऑफ द botanical garden, this morning when he got off the boat and found him in a very poor state after his long voyage. However, he made a point of visiting plantation before giving me his enlightened opinion. He deemed the soil is an excellent Please tell me as soon as possible, my dear, if you agree to these agreements, clove trees वगैरह. I long for you and hope with all my soul to see you again in the distant land that is so dear to us. जिसकी वाइफ शायद कहीं और ही रहती है, ठीक है, उसको इस सब के बारे में पता नहीं है। Monsieur Necker. Madame? Goodbye, Monsieur Necker. एबे ग्रिगोर को लिखा है ये लेटर। May God keep you, protect, Holy Grace, decide to fall back upon the rules of our order, forbid us from taking part in secular affairs. फालतू की चीज लिख रही है। ये लेटर किसको लिखा गया है? ओमिक ने। A letter addressed to Julian Raymond. Okay, God willing, this letter will reach you before the Estate Generals. We have encountered a rage vilest at Versailles and more merrily stick to agricultural issues. We must argue that we have no deputies and that whatever the white representatives demand. ये सब इसके पहले की चीज़ें लिखी गई है जो रोबोट्स ने अटैक किया था ना। आई डोंट नो कि ये इसका कुछ यूज़ बनता है कि भी नहीं। नेकर को लिखा गया है। The dear reader is however ना हाँ, ये भी पहले की चीज़ है। इन लोगों से बात करने से पहले मैं देखना चाहूँगा अपन को क्या क्या मिला। मेन मिशन एक मिला है, फाइंड द मिस्टीरियस मॉन्सियर मराठ। ये वही है जो चोर या जो भी है। To escape his enemies, Marat had gone into hiding into the cuirass of the North Paris. According to Robespierre, he was the only person who could help. He's the only person who could help it here. Tunnels in okay. कोई नया लोकेशन खुला है क्या मैप पे? यप, तो ये नए लोकेशन पे अपना मेन मिशन है। अपन जहाँ पे है यहाँ पे 2-3 साइड मिशन है। डिसाइफर द नोट्स, फाइंड एथनेस हाइडिंग प्लेस, ask Mosair D. Virapu for advice. Okay. And यहाँ पे क्या है? Riders go to the exchange spot, inspect
अच्छा, सेंट मेरी इंस्पेक्ट करने वाला है, शायद वो उसके वाइफ के लिए उसने बोला है। जो नेकर की वाइफ है उसका साइड मिशन है। मॉड्यूल नहीं, जर्नल में देखते क्लियर हो जाएगा। ये तो वो है अपने उसका किंग के सन के, मतलब क्वीन के सन के बारे में। who could possibly help Aegis decipher Dr. Levinor's notes? A man of science perhaps, why not ask Monsieur Bailey? बेली से पूछना है, ठीक है, तो ये मिशन वहां पे आगे बढ़ेगा। ओरिजिन्स ओरिजिन्स उसके बारे में, वोकेंसन, यूजिन वोकेंसन और उसके डॉटर के बारे में। ऑफन स्पेंड टाइम वंडरिंग इन द लुक्सेमबर्ग गार्डन, व्हाट इफ शी हैड गॉन टू हाइड देयर। ओके, ये लुक्सेमबर्ग में ये साइड मिशन। राइडर्स एंड कार्गो ये वहाँ पे, एंड मर्चेंट नेकर टू ट्रेजर इन सर्च ऑफ सुजन नेकर। अकॉर्डिंग टू मर्चेंट नेकर, Virgo was often seen in tourists, perhaps he knows how to open the। अच्छा, इसने अपन को दो चीज़ बताई है। एक इसने बताया है इसके वाइफ को ढूंढने के लिए कि वो जिंदा है कि मर चुकी है। दूसरा, इसने कोई सेफ के बारे में बोला था, एंड शायद मेरा बुई जो है, मेरा व्यू, वो शायद उसे खोल सकता है, तो उससे बात कर Aegis, सकते हैं। a word, s'il vous plaît. तुम सबको ही बात करनी है, मैं पहले अच्छा, मेरा भी इधर नहीं है क्या? होना तो चाहिए, ये है ना शायद, नहीं वो है। यप। Monsieur de Mirabeau. Minister Necker claims that you were a familiar face at the Tuileries Palace. That old story. Will it hound me until I have drawn my last breath? This, madame, is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain to dispel. To what do I owe the displeasure of having to defend myself once again? I must get hold of some documents that are kept in an armored safe in the king's chambers. What luck could resist your talents? Minister Necker said it was indestructible. Oh, I see. Well, let me think. Who could help you? After all, a lock is nothing more than a simple mechanism. Nothing that can resist the expertise of our dear Monsieur Bailly. Why don't you ask him for help? I'll be sure to do so. Now, who else might be of use? Oh, there's Monsieur Lavoisier as well, our gunpowder commissioner. I'm sure he'll have no trouble finding you something you can use to blow the door off that stubborn safe. Good. I will go and find him. Now, if you'll forgive me, I have an urgent matter to attend to. You are forgiven for everything. In that case, it has been a pleasure, madam. ओके, सो बेली के पास अपन को दो साइड मिशन के लिए जाना है। एक ये सेफ के बारे में बात करने के लिए, एंड दूसरा वो एक जो अपन को नोट मिला था ना क्वीन के सन के डेथ के बारे में, उसको डिसाइफर करने के लिए। बाकी लेवॉइसर से गन पाउडर के बारे में पूछना है। ये क्या बेली? ये बेली भी आ चुके हैं यहाँ पे, सब आ चुके हैं मेन कैरेक्टर्स। Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? I would like to access the contents of a safe that is supposedly unbreakable. Dare I ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you, madame? I need gunpowder to break through the door. Gunpowder? But I don't have a speck of it, mon ami. Do you think I just walk around with explosives in my pockets? Oh. I apologize. It was Monsieur de Mirabeau's idea. Mirabeau? What is this ridiculousness? I suspect he knows full well whatever he's playing at. Where is the animal? So we can ask him what's truly going on. He has left. He had an urgent matter to attend to. Eh bien, I'm sorry, madame. If I could inspect the safe and determine what metal was used in its fabrication, I might be able to find a solution. But given the circumstances, I'm sadly not in a position to help you. I understand. मेरा भी को कुछ पता है, वो इसलिए भागा यहाँ से। How do you intend to counter the king's actions? Unfortunately, we don't have the upper hand. For now, we can only hope to protect ourselves from him. I am convinced that something is afoot. Something that could destroy all our hopes in an instant. You have my full attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's arsenals, l'Arsenal de Paris in particular. For the past 2 days, a large quantity of gunpowder from Marsangy has been sitting near Les Invalides. It's in a warehouse by the factories. But the men I sent to take possession of the cargo and transport it to the Arsenal have gone missing. Do you realize what this means?
The gunpowder could have fallen into our enemy's hands. It's possible. One thing is certain. It's enough to destroy half of Paris. Whether it is still in the warehouse or has fallen into the wrong hands, we must find it urgently. Then, if possible, we must neutralize it. How? Simply by placing it in contact with water. Nothing could be easier in theory, but we must find a way to flood it. Flood the gunpowder? You're out of your mind, Lavoisier. We're in the most desperate of situations and you want to deprive us of such a valuable resource. What will our cannons use once we have formed our army of patriots? Your army, Marquis, is presently but a figment of your imagination. I see. So you're one of those men who would sound the retreat before the battle has even begun. I will go to the warehouse. Once I have located the powder, I will decide what to do with it. ओके अपने पास दो ऑप्शन है, एक और साइड मिशन है, ये मेन मिशन है. ओके Goodbye, Monsieur Lavoisier. मुझे पता नहीं गेम में मल्टीपल एंडिंग है कि नहीं, बट दिस सीम्स लाइक अ ब्रांचिंग पाथ. ये मेन मिशन नहीं है, साइड मिशन है. ये गन पाउडर साइड मिशन है. हाँ तो बस दो ऑप्शन है, तो गन पाउडर को डिस्ट्रॉय कर दो, नहीं तो बचा के लेके आओ वॉर में यूज करने के लिए. बेगी से बात करते हैं. भाई ये एपिसोड का एंडिंग जैसा. Ah, mademoiselle. I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. आज के एपिसोड का एंडिंग जैसा पता है, ऐसे काफी ज्यादा लोर स्टोरी के बारे में कन्वर्सेशन है, बट ये सब एक ही एपिसोड में निकल जाएगा तो अच्छा रहेगा. तो नोट्स फाउंड एंड ये वो सेफ के बारे में, नोट के बारे में. I found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Ah, je vois. These pages were written using some sort of shorthand. A variation on Taylor's system, no doubt. I'm wont to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. वापस लेवोइसियर के पास भेज रही है. I'm looking for a way to force a lock that is supposed to be unbreakable. Monsieur de Mirabeau advised me to ask you for help. But I'm an astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around lenses, filters, racks, and tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock works. God, Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all. Où est-il, ce brave homme? So that we might ask him. He has left. A matter that could not wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was so important that he would put himself in such danger? Intriguing indeed. मेरा भी विलेंस के साथ मिला हुआ है क्या, एनिमीज के साथ, कैलिक्स्ट्रो के साथ, क्योंकि वो सेफ में पक्का तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है, एंड उसने बस अपन को मिसलीड किया एंड वो हमें भाग गया वहां से. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? What is prussic acid? It's a volatile compound extracted from Prussian blue, which is a pigment derived from the cochineal, an insect. What does it do? Oh, it's a lethal poison, of the most dangerous sort. Though at weaker doses, it merely induces a deep soporific state, or a coma, if you will. A deadly poison. Aegis? Is everything all right? I did not find the warehouse. Vraiment? It's near Les Invalides, not far from Monsieur de Vaucanson's workshop. Goodbye, Monsieur Lavoisier. ओके सो किंग के बेटे को किंग नहीं, मेनली क्वीन ने अपन को मिशन दिया था. क्वीन के बेटे को पॉइजन किया था, बट इसमें पता है काफी कम अमाउंट में वो पॉइजन यूज किया तो कोमा में डाल सकते हैं बंदों को. Aegis, a word, s'il vous plaît. Has anyone seen Monsieur de Mirabeau? मेरे भी निकल गया है. Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. What do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles.
It counts some of the wealthiest plantation owners in the Empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santé are most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money, and their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between 2 planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. It is true that every reform must be approached with prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hôtel de Massiac alive. ओके सो यहाँ पे जो इतने सारे कैरेक्टर्स इकट्ठा हुआ है, ये इनमें से कुछ लोगों को एक दूसरे को पसंद नहीं करते. दैट इज क्लियर. Did you go to the Hotel de Massiac? No, not yet. Remember, it's by Les Halles, just west of the Marché des Innocents. What is the aim of this organization? We publish articles and exert our influence on those who are in a position to improve the lot of our unfortunate brethren. Our numbers grow by the day, and we have many illustrious members, such as the Comte de Mirabeau and the Marquis de Lafayette. But it was Monsieur Brissot and the abbot that founded the group. Good old Brissot. Shouldn't he be here by now? Yes, mon père. He should have arrived hours ago. Alas, there has been no sign of him. I hope to God that no misfortune has befallen him. See you later, perhaps. My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. ये बिशप है. We missed you when we had to leave our shelter at Place Saint-Merry. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Goodbye, Monseigneur. Allez en paix, Aegis. ये शायद आखिरी बंदा है ना, जिससे ये आखिरी बंदा. नहीं, वो Aegis. दोनों बच्चे अभी. I'd like to talk to you about my research. Do you have a few moments to spare for me? Certainly, mon père. I am listening. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion, like clocks that never need winding.
They get their energy from the souls of the dead, Aegis. They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Okay. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the three Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely, mon ami. And this leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist who died nearly 4 centuries ago? Not him, per se. Rather the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. तो कुछ alchemy यूज करके ये robots को power up किया जा रहा है using dead people या फिर human souls. What do you fear, mon père? What do I fear? Nearly 2 months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people of Paris. Oh dear. Flamel's tomb. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his lapis philosophorum. What is the lapis philosophorum, mon père? The Philosopher's Stone. Where do I begin? No one knows its true nature, or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its very existence is questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. क्या क्या चल रहा है इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिला है ना पिछले 15 मिनट में. Where is this tomb? In the church's crypt. The priests always ensured that it remained undisturbed, despite the mystery surrounding it. But now they're no longer there to protect it. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis, Oui, mon père. will you help us get to the bottom of this? Did you not say that it was impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The penitent's door behind the Châtelet leads to the Quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year, I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. तो the key का एक entrance का key मिला अपन को. Goodbye, mon père. एक डोर था, तुम्हें याद है आज के एपिसोड में जो मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था बट वो लॉक्ड था. मे बी वो लोकेशन हो सकता है, नॉट श्योर, बट अपन को बहुत सारे साइड मिशन मिले. एनीवेज एपिसोड में यही पे रैप अप करता हूँ. इससे बात करना बचता है तो उससे मैं ऑफ रिकॉर्डिंग बात करता हूँ. अगर कोई साइड मिशन इससे भी मिलता है वो मैं आपको अगले एपिसोड में बता दूंगा. बाकी सारे कैरेक्टर से तो अपन बात कर चुके हैं. तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा मेन मिशन करना है, कौन सा साइड मिशन करना है. मैं सोच रहा हूँ काफ़ी सारे साइड मिशन आए तो थोड़े से साइड मिशन नॉकआउट करेंगे आगे आने वाले 1-2 एपिसोड में. सो या सी गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड. आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.